Hello students, welcome to RT Academy. Now this is the second session for the article of the refraction और आज के session में we are going to learn about the lateral shift through the glass slab and some of the natural phenomena related to the article of the refraction. Now, since we are dealing with the refraction article, in the refraction we have understood that the ray of the light travels from one medium to another medium depending upon that which medium is rarer and which is denser. The ray is going to bend towards the normal or away from the normal. This gives us beautiful natural phenomena like the twinkling of the stars and the extra duration of the day. Extra duration of the day means that our day becomes longer by 2 minutes in the morning and 2 minutes in the evening because of this phenomena known as a refraction. You're going to learn about that, and we're going to learn about how does a glass slab is going to affect the path of the incident ray by the phenomena of the refraction. So let's start the article first of all with the glass slab shift. हम यूजुअली जब बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वी टॉक अबाउट दैट द बेंडिंग ऑफ द रे इज देयर. इन द लास्ट सेशन हमने डिस्कस करा कि इस आइडिया को हम डिविएशन के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं. नाउ टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग अनदर लैंग्वेज व्हिच इज द शिफ्ट. पर शिफ्ट की लैंग्वेज हमने लास्ट सेशन में भी यूज करी थी एज अ नॉर्मल शिफ्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर काइंड ऑफ अ शिफ्ट ओवर हियर. So let's understand first of all that what is happening. हमारे पास अगर एक ग्लास स्लैब है एंड वी आर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट लेट्स से प्लेस्ड ओवर हियर. अब ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपने एक पॉइंट मार्क लगा रखा है पेपर के ऊपर, किसी शीट ऑफ पेपर के ऊपर. अब आपने उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया, जैसे आपके पास कोई पेपर वेट हो, आपने उसके ऊपर प्लेस कर दिया हो. एंड नाउ फ्रॉम द व्यू, फ्रॉम द अपर व्यू, आप ऊपर से उसको देख रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट ओ मार्क. तो जो रे ऑफ लाइट है जो कि इस ओ मार्क से निकलेगी, लेट्स ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट. सो दैट रे ऑफ लाइट गेट्स इंसिडेंट हियर. और हमें क्योंकि पता है कि जो ग्लास स्लैब है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ए से ज्यादा होगा, सो द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम. As the ray travels from the denser to the rarer medium, so it suffers deviation away from the normal. So the ray of light it bends away from the normal and goes like this. अगर हम एक सीधी रे ऑफ लाइट देखते, सीधा नॉर्मल इंसिडेंस स्पेस को देखते, तो फिर ये जो रे ऑफ लाइट है ये सीधी यहाँ पे निकल जाती. सो अपरेंटली तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही हैं, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं. तो हम क्या करेंगे, इनको बैक ट्रेस करा के इनको यहाँ पे मीट करा लेते हैं यहाँ पे. सो इससे हमने नॉर्मल शिफ्ट के बारे में सीखा हुआ था. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग एल्स ओवर हियर टुडे इज, हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है, मान लेते हैं कि वो इस तरीके से आ रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट डायग्राम. दिस वाज अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. And now, since it is traveling from the air to the glass, so it is going to bend towards the normal. So this ray of light bends towards the normal. So theta 2 angle जो है जो आप observe कर रहे हैं वो theta 1 से कम है. And now at the second interface, first interface is supposed to be the B, second interface is supposed to be the C. So at the interface C, what happens now? The ray of light is traveling from the glass to the air medium. So as the ray of light is traveling from the glass to the air medium, so now it is traveling from the denser to rarer, so it is going to bend away from the normal. So now what we are going to focus upon is that this ray of light is known as an incident ray and this is known as an emergent ray. मतलब जो ray of light है वो ग्लास स्लैब से बाहर निकल चुकी है. अब हमारे को एक समझना है कि जो पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में क्या इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में कितने एंगल से डिविएट हुआ है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. उसके लिए एट अ पॉइंट बी सबसे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा लेते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं. सो दैट्स 1 into sin of theta 1 is equal to, that's the refractive index of the glass, mu g लिख लेता हूं, and into sin of theta 2. That's a Snell's law at the first interface, that is at a B. Now we apply the Snell's law at the second interface. So at the second interface, the angle of incidence is supposed to be theta 3. But if I look carefully,
Then this angle and this angle, ये angle और ये angle alternate angles हैं. इसका मतलब theta 2 and the theta 3 angles which are mentioned over there are exactly the same. Which means I can write this as mu g, क्योंकि ray of light अब कहां से आ रही है? From the glass. और कहां जा रही है? एयर में. सो म्यू जी इंटू साइन ऑफ थीटा 3 लिखना चाहिए था, पर थीटा 3 के वैल्यू थीटा 2 के बराबर है. सो दैट्स साइन ऑफ थीटा 2 इंस्टेड. मतलब मेरे को लिखना तो साइन थीटा 3 था, पर मैं उसकी जगह साइन ऑफ थीटा 2 लिख लूंगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आई विल ऑल्टर. एंड द रे ऑफ लाइट इज कमिंग इनटू द एयर मीडियम, सो दैट इज 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 4. अब थीटा 3 की जगह अगर मैं थीटा 2 मेंशन आउट कर लेता हूं, so this equation seems to be mu g sine of theta 2 instead of theta 3, that is equal to 1 into sine of theta 4. Now what's more interesting in this idea is कि जो mu g sine of theta 2 है वो सेम टर्म है, जो कि बेसिकली 1 into sin theta 1 के बराबर है. सो इनएविडेंटली हो क्या रहा है कि मैं एक्चुअली में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं म्यू जी साइन थीटा 2 की जगह, दैट इज 1 into sin theta 1. So that is coming as equal to 1 into sin theta 4. यहां से मुझे समझ में आता है कि sin theta 1 sin theta 4 के बराबर है, मतलब थीटा 1 की वैल्यू थीटा 4 के बराबर आ रही है. और अगर ऐसा है तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जो एमर्जेंट रे है दैट इज emerging parallel to the incident ray. So the emergent ray is parallel to the incident ray, but there is a change. Change क्या है? It has observed a shift. It's observed a shift. And what kind of the shift? That shift is defined as a normal shift. No. Normal shift जो है, that was we actually checked upon along the normal direction here. उसको हमने OI से मेंशन करा था, which was taken as X in the last session. अब जो ये जो particular shift है, that is the perpendicular distance between the incident and the emergent ray. So that shift which is observed is denoted by CE over here. So that's the normal shift. That's a perpendicular distance between the incident and the emergent ray. That is a lateral shift. तो इसको हम y term से denote कर लेते हैं. So this distance CE is labeled as y. So let me just complete this diagram here. That let's say this was a incident ray. This was a incident ray. And now this is the emergent ray. So we can see that the emergent ray is passing parallel to the incident ray. और अगर मैं इसको यहाँ पे बैक ट्रेस करता हूँ like this, so we can see that these are parallel to each other. And so I sketch the perpendicular. तो मैंने यहाँ से ये perpendicular sketch on करा है. And so this distance is supposed to be defined as a lateral shift. तो मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So how do I find out that? So उसके लिए मुझे एंगल्स चाहिए थे. So let's say this was an incident angle. Let's say that was angle I. So this was the angle R over here. So this was angle R over here, and this is the angle E over here. पर मैंने प्रूव कर लिया है कि एंगल I और एंगल E सेम है. सो इंटरनल एंगल्स मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिए थे कि एंगल R और एंगल R सेम है. मैंने ये भी प्रूव कर लिया है कि एंगल I और एंगल E सेम है. सो एंगल E को कई बार आप आगे जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो विजुअल एंगल भी बोलते हैं, because this actually goes into our eye. So hence it is also known as a visual angle. Now suppose I am writing this as angle I over here. So in that case I am able to see that this angle is going to be, ये पूरा angle कितना है? This is angle I, ये पूरा. So this angle becomes as equal to angle I minus of angle R. And from this particular triangle now, अब मैं इस triangle को name कर लेता हूँ. So ये इंटरफेस को मैं A लिख लेता हूँ. This is A, and so this becomes OA, and this ray of light, that is OA. और मैं triangle यूज कर लेता हूँ, this triangle, this as a triangle, इसको N लिख लेते हैं. So that's OAN. इसमें मुझे y find out करना है, where this angle is supposed to be angle I minus angle R. So I can use from here sine of I minus of R is equal to y upon OA. So मुझे y की वैल्यू मिल जाती है जो मुझे चाहिए, that is OA sine of I minus of R. And our only task is to get the value for the OA.
For getting the OA, I'm going to construct this triangle, और इस triangle में this side is the thickness of this glass slab. So I can use cos of R as equal to T upon OA इस triangle में से, where T is labeled as the thickness of the glass slab. यहां से मुझे T की वैल्यू मिल जाती है which is nothing but as equal to मुझे OA की वैल्यू चाहिए इंस्टेड यहां से. सो द वैल्यू फॉर द OA फ्रॉम हियर is equal to T upon cos of R. We substitute the value for the OA over here, so the y becomes equal to T upon cos of R and into sine of I minus of R. That becomes my expression for the lateral shift. So there are two different kind of the shift which we are interested in. One is supposed to be the normal shift जो कि normal axis के along है. And now this is the second kind of the shift जो कि perpendicular distance है between the incident and the emergent ray. And that value we have just calculated through this expression. Right? So the y that becomes as T upon cos of R and sine of I minus of R. Now if you want to relate the normal shift with the lateral shift, we can do the same. That if we are looking at the apparent position of the object, so that is let's say the I position over here, तो ये distance जो है इसको हम normal shift define कर रहे हैं, और ये जो distance है, this is what we are defining is the apparent shift, that is the lateral shift over here. So x और y को यहाँ से relate कर सकते हैं. If I am able to relate this, so this is x and this is y. So this angle over here is I. So using sine of I, that becomes equal to y upon x. So I can relate the y with the x. इसके अंदर y क्या है? That is a lateral shift. और x क्या है? That is a normal shift. Moving on. So we have observed a very peculiar phenomena in the nature that is known as a twinkling of the stars in the night. Now why does a twinkling of the star takes place? Thanks to the variable refractive index of the different layers of the atmosphere. Now what exactly happens is that as we move up in the layers of the atmosphere starts becoming thinner. And so the optical density of the different layers of the atmosphere is going to be different. This is one of the features. So we have the refractive index of the layers of atmosphere is different. This is one of the reason. The second major reason is supposed to be, the reason is that the layers of the atmosphere keeps on constantly shifting because of the air movement, the wind movements. तो एक तो है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव ऑन करते हैं, सो देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एवरी डिफरेंट लेयर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इन नाइट. सो इन नाइट द layers which are supposed to be closer to the surface of the earth are appearing to be having a different optical density with respect to the upper layers. Now as we assume that we are moving from upper layers towards the earth surface layers, so let's visualize the optical densities of the medium. So as I said that the upper layers are going to be thinner, which means that the density, if I am supposedly writing this as mu1, mu2, mu3 and mu4, so what I am able to understand is that mu1 is going to be lesser than mu2, is going to be lesser than mu3, is going to be lesser than mu4. That means the layers closer to the surface of the earth appears to be more dense in comparison to the upper layers. अब ऐसा सोचते हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है जो स्टार से यहां पर आने की कोशिश कर रही है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो नाउ इट हैज टू पास थ्रू द different optical dense layers.
कि हमें knowledge है that the ray of light traveling from the rarer to denser bends towards the normal. So this ray starts bending towards the normal. So once again, when it enters into the second interface, again it bends towards the normal. So there is a continuous bend which is towards the normal. And finally, if we are standing here, let's say the observer is standing here, so this ray of light is going to enter into the eye of the observer. Now, if actually ये ऑब्जर्वर ये परसीव करता है कि रे ऑफ लाइट तो सीधी आती है बिकॉज ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, तो अगर वो रिट्रेस करता है उसके पाथ को एज्यूमिंग द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, so will find the light to be coming from here. So the apparent position of the star which he perceives is higher than the true position of the star or the actual position of the star. So if this was the actual position of the star, this is the apparent position of the star, मतलब जहां पे स्टार एक्चुअली है उससे थोड़ी हायर पोजीशन पे फील होगा the star. Now this also affects the intensity of the light which is going to enter into our eye. So now how does the intensity of the light varies? ये जो layers हमने बनाई हैं, the layers of the atmosphere, they keep on shifting like this. They keep on shifting like this because of the movement of the air. और अगर ये continuous shifting होती है, the air layers continuously keep on shifting, जिसका मतलब ये जो bending का amount है वो continuously change होता रहेगा. Which means that if I am looking at an observer now, so if this is an observer, so ray of light might now start adopting another path and reach here. So what happens that the amount of the light which is entering into our eyes keep on flickering, keeps on changing. So which causes the star to sometime look brighter and sometime look dimmer. So this continuous dim behavior and the bright behavior gives an impression of the twinkling effect, and which is labeled as the twinkling of the stars. So in a simple statement, we can mention that the twinkling of the star is due to the atmospheric refractions, but what I have explained to you is a detailed expression view of that. Similar kind of phenomena is also visible in the morning and the evening time, जब हम उसको dawn और dusk का time बोलेंगे. So what happens during these particular time behavior in the morning, early morning and the evening behavior, that the sun is visible sometime earlier before the actual sunrise, and after the actual sunset the sun is again visible for a few minutes. Now आपको curiosity होगी that how much is the exact duration. So the exact duration is around 2 minutes in the morning and 2 minutes in the evening after the sunset. It explains to me that there is an approximate increment of 4 minutes per day because of this phenomena. So that means we need to understand that how does it actually takes place. So we do understand कि हम बात कर रहे हैं फिर से एक बार कब, सुबह और शाम की, तो तब the temperature near the surface of the earth is comparatively lesser, which means the layers which are closer to the surface of the earth are supposed to be behaving denser. Now, as we also know that the layers become thinner in the density as the height increases in the atmosphere. So let's look at the position of the sun over here, which is below the horizon level. Now horizon level का मतलब होता है that is somewhere at infinity where it seems that the sky is meeting the land. So that's the infinity जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, that is supposed to be the horizon. So we can see that the sun over here is below the horizon actually. So the sun is below the horizon, so हमें वो नहीं देखना चाहिए, because we can see as far as the horizon and above the horizon. So the true position of the sun is now below the horizon. So that means, let's say, imagine that this is before the sunrise behavior. But what happens when the sun is in this particular position? So say a ray of light hai, which starts traveling, but it has to pass the various layers of the earth. But as the upper
layers are rarer. So it is traveling from rarer to more denser mediums. And as it is traveling from the rarer to the more denser mediums, so it is continuously having a bend. And because of that bending, it is able to be seen to this particular observer stationed on the surface of the earth. अब ये जो ऑब्जर्वर है उसको तो पता है that the light basically travels in a straight line path. So he perceives that ये जो ray of light है वो actually यहाँ से आ रही है. And so he is able to see the sun in this perceived position. उसको लगेगा कि सनराइज हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में जो सन है वो अभी होराइजन के नीचे है. So this happens for around 2 minutes in the morning, and this also happens for the 2 minutes in the evening, because of which there is a 2-minute increment in the morning and a 2-minute increment in the evening. So the duration of the day because of this phenomena increases by on an average by 4 minutes per day. So that's 4 minutes per day as an increment, as per day increment. Let's talk more about now the practical behavior. Practical behavior means कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, right? So let's say first liquid is up to a particular height d1, हम उस लिक्विड की डेप्थ को d1 बोल सकते हैं या हाइट को d1 बोल सकते हैं, and the second liquid is having a depth of d2. Now there is an object which is placed at the bottommost position over here, let's say over here. Now what exactly happens कि अगर हम इसको एयर से देखने की कोशिश करते हैं, so what exactly happens? Let me show by the sketch of the diagram. So the ray of light starts traveling from here and it moves from D1 to D2. मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है? It is moving from the denser to the rarer medium. So D1 is optically denser than D2 and D2 is optically denser than air. So first the ray is incident from D1 to D2, first interface पे. So it is traveling from the denser to rarer, so it bends away from the normal. And now it hits another interface, पर फिर से D2 जो है वो ज़्यादा dense है in comparison to the air medium. So once again the ray of light suffers the refraction and it bends away from the normal. So like this. So now we need to look it in the image. तो अगर first interface से अगर हम object की apparent position को देखते हैं, so that object apparent position was supposed to be over here, तो इसको मैं I1 से denote कर लेता हूँ this position. So this position is denoted as I1. But due to the second interface, मैं इस line को extend कर लेता हूँ. Due to the second interface, once again there is supposed to be the refraction. So by retracing the ray back, I am able to locate the effect of the second refraction such that the object now appears in this elevated position. अब वो I1 की जगह कहाँ पे दिखेगा? I2 पे. अगर D2 वाली लेयर गायब होती तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो I1 पे दिखता, पर D2 लेयर के प्रेजेंट होने की वजह से और शिफ्टिंग हो चुकी है और इस वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है वो I2 पोजीशन पे दिख रहा है. अब मुझे क्यूरियोसिटी है कि ये I2 पोजीशन है कहाँ पे. मेरे लिए जो रेफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी द अपर मोस्ट लेयर, जिसको मैं एक रेफरेंस लेवल मानूंगा और जितने भी डिस्टेंस है मुझे उस लेयर से देखने हैं. तो एक्चुअली में अगर मैं ऑब्जेक्ट की डेप्थ को देखता हूं, सो दैट इज इक्वल टू d1 प्लस d2 विच इज गोइंग टू बी बेसिकली द एक्चुअल डेप्थ ओवर देयर. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि एपरेंट डेप्थ किधर है. सो व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? तो एपरेंट डेप्थ जो है दैट इज फ्रॉम द सरफेस लेयर, इसको मैं s लिख लेता हूं, वहां से I2 तक, तो वो मुझे फाइंड आउट करनी है. सो I2 मुझे फाइंड आउट करना है. उसके लिए सबसे पहले आई विश टू फाइंड आउट द I1 पोजीशन. सो ये जितनी पोजीशन है फर्स्ट इंटरफेस से, ये वाली जितनी पोजीशन है, इस डिस्टेंस को मैं h1 लिख लेता हूं और जो फाइनल पोजीशन है मैं उसको h2 से मेंशन कर लेता हूं. So if I'm writing for the near normal incidence for the first interface, so I can start writing d1 upon the refractive index of the first medium, that is mu1, is equal to d2 upon mu2 as we enter into the second refractive index. This can also be written through the article as a d actual and d apparent are related as a d apparent is supposed to be equal to d actual upon mu. यहाँ से भी लिख सकते हैं और mu की वैल्यू को लिख सकते हैं mu denser upon mu rarer, मतलब mu1 upon mu2. तो सेम रिलेशन हमें मिल जाएगा. दिस इज एन ईजियर वे टू राइट दिस.
कि d1 जो है दैट्स अ डेप्थ ऑफ द फर्स्ट लिक्विड। यहां पर उसका मतलब है कि इंटरफेस से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कितनी है, d1 है। रे कहां से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से, कहां जा रही है, सेकेंड मीडियम में। तो जो उसकी पोजीशन है अपरेंटली चेंज हो गई है, कितनी हो गई है, d2 हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि वो सेकेंड मीडियम में चला गया, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, right? So this apparent position we have mentioned here as h1. So that's the apparent position h1. That is because of the first interface. So d1 was actual and h1 is apparent. तो यहां से हमें h1 की वैल्यू मिल जाती है where h1 is supposed to be d1 upon mu1 into mu2. This is the effect of the refraction and the first interface. Now we move on to the second interface. Now जो ऑब्जेक्ट है हमें कहां दिख रहा है, I1 पे दिख रहा है। अब I1 का डिस्टेंस S से कितना है, दैट इज गोइंग टू बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन। सो दिस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वो कितना है, दैट इज d2 प्लस ऑफ h1। So now this is going to behave as an object distance, so that is d2 plus of h1। अब रे कहां से आ रही है, that is coming from the second medium, that is of the refractive index mu2, and the final position from the surface क्या है, h2, and the ray has managed to get into the air, तो वहां पे refractive index कितना है, 1। So once again applied a relation d1 upon mu1 equal to d2 upon mu2। तो मुझे केयरफुली चेक ऑन करना है कि mu1 में जो डिस्टेंस था दैट वाज d1 एट द फर्स्ट इंटरफेस, और mu2 में जो जब रे ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में जा रही थी तो उसके अपरेंट पोजीशन क्या हो गई थी, h1। नाउ द पोजीशन इज I1, तो I1 का डिस्टेंस S से चेक ऑन करा, सो I1 का डिस्टेंस S से कितना है, d2 प्लस h1। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से अब I1 पे अपीयर हो रहा है। तो फाइनली सेकेंड रिफ्रैक्शन की वजह से कहां पे अपीयर होगा, I2 पे। तो I2 की पोजीशन सरफेस से कितनी है, h2, और I1 की पोजीशन सरफेस से कितनी है, दैट इज d2 प्लस h1। So finally I am able to get the value for the h2 from here, so that's equal to d2 plus h1। h1 की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो कि हमने पहले फाइंड आउट करा है, that is d1 mu2 upon mu1 and is whole divided by mu2। So this works upon as d2 upon mu2 plus d1 mu2 upon mu1 and upon mu2। So mu2 cancelled out है, so मुझे h2 की वैल्यू मिल जाती है, which I can organize and write as d1 upon mu1 and plus d2 upon mu2। This looks like an interesting and easy relation for me। इसका मतलब I can extend this particular relation। For example, suppose मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है और इस पर्टिकुलर कंटेनर में n नंबर ऑफ लिक्विड्स हैं अपनी ऑप्टिकल डेंसिटीज के हिसाब से। So let's say it's ranging from d1 depth to d2, d3 and so on and so on, and this is having the refractive indices mu1, mu2, mu3 and so on। इसका मतलब जो फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज मिलेगी फ्रॉम द अपर सरफेस लेयर, द फाइनल पोजीशन is going to be as h equal to d1 upon mu1 plus d2 upon mu2 plus d3 upon mu3 and so on till the nth layer। ये मुझे इस पर्टिकुलर रिलेशन को डिराइव करके समझ में आया, तो मैं इसको क्या मानूंगा, दिस विल बी नोन एज एन एपरेंट पोजीशन। सो दिस इज नथिंग बट द एपरेंट पोजीशन। अगर मैं एक्चुअल पोजीशन को चेक करता हूं, सो द एक्चुअल डेप्थ वाज सिंपली इक्वल टू d1 plus d2 plus d3 and so on till dn। Now using this particular expression I can calculate the effective refractive index of a single liquid। अगर मैं इन सबको एक सिंगल लिक्विड से रिप्लेस करना चाहूं ताकि जो इमेज है फाइनली वो वहीं दिखे जहां पे अब दिख रही है, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। और अगर मैं इन सबको हटा के एक सिंगल लिक्विड को यहां पे फिल कर लेता और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एज्यूम कर लूं, तो सीधा जो ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां रखता और मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से मान लो कि फाइनल इमेज यहां आ रही थी, तो एक सिंगल रिफ्रैक्शन की वजह से भी फाइनल इमेज सेम पोजीशन पे आ जाए। So the value for that effective refractive index will be equal to d actual upon d apparent। So d actual की वैल्यू कितनी है, that is d1 plus d2 till dn and divided by d apparent which is d1 upon mu1 plus d2 upon mu2 till dn upon mu1। So I'm able to calculate a value for the effective refractive index of that
equivalent liquid. So this was an article for the today's session where we discussed about first of all the lateral shift produced in a glass slab, एंड वी रिलेटेड कि लेटरल शिफ्ट जो है वो नॉर्मल शिफ्ट के साथ में किस तरीके से बिहेव करती है, दोनों में डिफरेंस को भी कंसिडर करा. एंड वी टॉक्ड अबाउट सम नेचुरल फिनोमिना लाइक द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार एंड early sunrise and a delayed sunset, which increases the duration of the day by 4 minutes on an average. And then we talked about the refraction through the multiple slabs. That's all for the today's session. That was the session number 2. So please watch both the sessions, the session number 1 and session number 2, which is basically giving us the basics for the refraction at a plane surfaces. In the next session, we are going to talk about the beautiful phenomena which is known as the total internal reflection. Thanks.